Machine learning deals with training of computer systems to predict known data and unknown data. For that particular purpose, there are several concepts which are related to the area of machine learning, such as association analysis, supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Now, what are these techniques and what are different examples related to these techniques? If we start from the learning associations, what are learning associations and how they are useful? So in this slide, what I have taken is, I have taken an example of this basket analysis. So this is basically market basket analysis, in which we have two things, where we have probability of y given x. So that we say that probability of yx represent probability that someone who buys x also buys y. That we know that someone has already bought x. अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जिसने x खरीदा है, if he also buys y. So what would be that probability? If we have an example which is shown here, 1, 2, 3. So these are our transaction IDs and these are our items. So for these 5 items, if we say that someone who has already bought beer, so he will buy chips also, then we can say that this probability will become 0.7. So if someone is buying beer, so it is very high chances that he will also buy chips with that beer type thing. Next is classification. So classification is basically assigning some tag or label to some unknown data or some training data. Example shown in this particular example is of credit scoring. So credit scoring से मुराद क्या है कि कौन से ऐसे क्लाइंट हैं, फॉर एग्जांपल फॉर अ बैंक, कि जो यानी कि क्रेडिट लॉस कर जाएंगे, या कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास क्रेडिट रहेगा. फॉर दैट पर्पज वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 categories which are basically row scoring and high scoring. So basically we want to differentiate between customers who have low risk of credit scoring, यानी कि उनके कम चांसेस हैं कि वो दिवालिया हो जाएंगे या बैंकरप्ट हो जाएंगे. ऑन द अदर एंड जो हाई रिस्क के कस्टमर्स हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो दिवालिया हो सकते हैं. अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली कि ये हमारे पास वो डाटा है जो लो रिस्क क्लाइंट्स का है और ये वो डाटा है जो हाई रिस्क क्लाइंट का है. अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगी? डिस्क्रिमिनेशन मींस इन दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि विच वन आर लो रिस्क कस्टमर्स एंड विच वन आर हाई रिस्क कस्टमर्स. इफ इनकम इज ग्रेटर देन θ1 एंड सेविंग इज ग्रेटर देन θ2, तो दिस इज आवर θ1 एंड दिस इज आवर θ2. कि ऐसे बंदे जिनकी इनकम जो है वो θ1 से ज्यादा हो और जिनकी सेविंग θ2 से ज्यादा हो, देन दे आर लो रिस्क. सो बेसिकली दिस बिकम्स लो रिस्क. वाई? क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो θ1 से ज्यादा हैं, दीज वैल्यूज, और उनके जो सेविंग्स हैं दे आर ऑल्सो मोर देन दिस θ2. सो दिस इज बाउंड्री इफ वी सी दिस वन बेसिकली. सो दिस इज ऑल बेसिकली दोज पीपल विच हैव इनकम ग्रेटर देन θ1 एंड सेविंग ग्रेटर देन θ2. तो इनको कम चांसेस हैं कि वो दिवालिया होंगे. ऑन द अदर हैंड अदर पीपल हैव गुड चांसेस दैट दे विल बी बैंकरप्टेड. So applications or different applications available for classification. There are several applications such as this face recognition based. How can we identify a face of a person based on his pose, lighting conditions, occlusion, makeup, hairstyle. So इनको occlusion we can see that because of occlusion basically रुकावट को कहते हैं कि अगर किसी ने glasses पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है, तो उसकी आईज क्लियर नहीं होंगे. इसी तरह दाढ़ी रखी हुई है तो उसका चेहरा क्लियर नहीं होगा. तो यूजिंग प्रीवियस मेथड, जैसे हमने अभी स्कोरिंग का मैकेनिज्म बताया था, क्रेडिट स्कोरिंग का, उसी तरह से हम एक फेस रिकॉग्निशन का एप्लीकेशन बना सकते हैं इफ वी हैव ऑल दिस फैक्टर इंफॉर्मेशन सच एज पोज, लाइटिंग, ऑक्लूजन एंड सोच. सिमिलरली कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड सो ऑन. सो ये वो एप्लीकेशन हैं दैट कैन बी डेवलप्ड यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, और इन पैरामीटर्स की प्रॉपर वैल्यूज की बेस पे यूजिंग इफ एल्स कंडीशंस वी कैन मेक अ क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन. Then we have a prediction method or prediction algorithm. So prediction ये है कि for example if I want to sell my car, so how I can say what would be the price of that car. So अब उस कार के अगर हमने प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हम we will say that what are different attributes of that car. For example this X basically it shows that what are different attributes. So अब जो attributes हैं they are basically say that what would be the price. और जो price है हमारे पास that is our final output. This is price and these are our attributes. अब होता क्या है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं हर एट्रीब्यूट की अलग वेटेज है. फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू बाय सेल अ कार, इफ इट इज अ न्यूअर मॉडल कार, लेट्स से इन 2014 और 15 कार, सो वेटेज काफी हाई होगी कि इट वुड बी अ एक्सपेंसिव कार एज कम्पेयर टू सम कार विच इज अ 2007 मॉडल. सिमिलरली ब्रांड वाइज कि अगर एक हमारे पास कार है जो माइट बी फ्रॉम टोयोटा मोटर्स है,
या फ्रॉम होंडा मोटर है, दैट वुड बी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अ सुजुकी कार. तो व्हाट विल हैपन, दीज फैक्टर्स विल हैव डिफरेंट वेट्स. अब जो गाड़ी के जो रेट बनेगा या जो सेलिंग प्राइस होगी, दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन द रेट्स ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स. तो जो प्रिडिक्शन है वो कैसे काम करेगी कि वो ये देखेगी कि कैसे जो आउटपुट आ रही है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल वेटेज, कि हर जो इंडिविजुअल फैक्टर है उसकी क्या वैल्यू है इन द मार्केट, और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फैक्टर्स इट विल डिस्क्राइब कि व्हाट वुड बी द फाइनल आउटपुट.